subscribe to our channel and press the bell icon. बस सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th इंग्लिश राइटिंग स्किल नॉन वर्बल टू वर्बल SCERT क्वेश्चन बैंक के ये 5 नंबर के लिए आने वाले सवालात का एक जोड़ है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, आखिरी तक देखिए। नॉन वर्बल टू वर्बल इसके लिए 5 नंबरात है। अब इसको कैसे हल करना है, इसके लिए कुछ हिदायत दी गई है। फॉर दिस क्वेश्चन यू विल बी गिवन सम नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, अ ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट, अ वेव डायग्राम, अ पाई डायग्राम। यानी इस सवाल के लिए आपको कुछ नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि उसमें टेबल में होगी या ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट, वेव चार्ट या पाई डायग्राम में मालूमात दी जाएगी। The information given will be a bare minimum. It will be diagrammatical or pictorial and consist of a few words or phrases. यानी जो मालूमात है ये डायग्रामेटिकल या पिक्टोरियल होगी, उसमें कुछ चंद अल्फाज या फ्रेज लिखे जाएंगे। The information will be about some topic or issue which will be mentioned either as the title of the table, pie diagram or tree diagram or in the center of the web or map. जो मालूमात है वो आपको टेबल, पाई डायग्राम, ट्री डायग्राम या वेव डायग्राम में दी जाएगी और उससे आपने नॉन वर्बल से वर्बल बनाना है, यानी पैराग्राफ लिखना है। रीड द पॉइंट्स केयरफुली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन द आंसर। अब जो दिए गए नुकात है, पॉइंट्स है, उसे आपने बहुत बारीक बीनी से पढ़ना है, उसे समझना है और आपने जवाब लिखना है। यू आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ द इंफॉर्मेशन टू राइट 1 to 2 पैराग्राफ्स covering all the points given. Don't forget to give a title to the paragraph. यानी आपने 1 से 2 पैराग्राफ लिखना है और उसको टाइटल भी ज़रूर देना है और पूरे पॉइंट्स उसमें कवर करना है। मार्किंग स्कीम है टाइटल 1 मार्क, यूज़ ऑफ गिवन पॉइंट्स 2 मार्क्स, ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन 1 मार्क, अप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन 1 मार्क, टोटल 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 के बी में आता है। इसका पहला है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, 5 मार्क्स के लिए आता है। नॉन वर्बल टू वर्बल आज करने जा रहे हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी दिए गए पॉइंट्स की मदद से आपने यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, वॉइस मेल, म्यूज़िक, कंप्यूटर नेटवर्क, कैमरा, रेडियो, इंटरनेट, SMS। लेट्स बिगिन। द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स यानी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमालात। द मोबाइल फ़ोन इज़ अ वंडरफुल मॉडर्न इन्वेंशन. It has many uses. Its most important use is as a phone that you can use wherever you go. It also has a voicemail facility which helps you record phone calls. Besides, it has the facility of a camera whereby you can click pictures. It also has the facility of FM radio and downloading music. You can send short SMS messages by the mobile phone. A recent facility is that mobile phones can be connected to a computer network, and so you can also avail of the internet facility. Social media nowadays let us be in touch with our friends and relatives. It is really a good device to connect anywhere, anytime in the world. इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नॉन वर्बल टू वर्बल है। अब यहाँ पर आपने एक वेब डायग्राम दिया हुआ है, इसे पढ़ना है। हाउ टू अचीव सक्सेस, प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच। अब देखिए इसमें ख़ास बात है, ये नॉन वर्बल में एक शॉर्ट स्पीच तैयार करना है। प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच यूजिंग फॉलोइंग पॉइंट्स हाउ टू अचीव सक्सेस। डिटर्मिनेशन, डिवोशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, 4 ही पॉइंट दिए गए हैं। चलिए इसके ऊपर बनाते हैं हाउ टू अचीव सक्सेस। स्पीच कैसे शुरू करते हैं। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर 10th graders, a very good morning. I am grateful to the school for giving me this opportunity to talk to you. I take this opportunity to stand before you to share my views on how to achieve success. It is rightly said, who you are tomorrow begins
with what you do today. Your desires and actions today will define and shape your tomorrow. It is important, therefore, to have a plan for a goal. Without a plan, it is just a wish. The plan that you make should be realistic and not over ambitious. Know your limitations and be proud of your potential. Secondly, it is important to fight the challenges that come to your way with grit and determination. These challenges help us grow. Not giving up is the surest way to achieve success. Coupled with this, my dear friends, if you have a positive attitude towards life, you are halfway through. A successful person sees even the invisible. If you can imagine it in your mind, you can hold it in your hand, goes the famous quote. Remember that though the world has become competitive, it is important to keep sweet and not forget your morals and principles. For a clear conscience is the most comfortable pillow to sleep on. Additionally, success is a mix of social, physical, emotional, and mental well being. Success is defined by your happiness. If you are happy, you are successful, but if you are successful, you need not necessarily be happy. So, do all that makes you happy. Keep in touch with your closed ones. Be compassionate and humble. Success is not a destination to be reached, but a journey to be enjoyed. Put in your best, go for your goals, make it your living mission. And although at first people will ask you why you are doing it, in the end they will ask how you did it. All the best for your board exams. Thank you. Non-verbal to verbal. Given below is a pie chart showing the result of 100 students of standard 10th in the preliminary examination. The chart shows the number of students who failed in the subjects mentioned. Now write sentences describing the performance of students in the exam. History 5%, geography 15%, science, English and maths. Let's begin. Performance of the students. SSC exam plays important role in every student's life. They have to appear for all the compulsory subjects. This pie chart shows the result of 5 subjects in the first preliminary examinations. In all, 100 students appeared for the exams. Of these, 22% students failed in mathematics, 28% did not make the grade in English, 30% students failed to do well in science, and 50% did not get the passing percentage in geography. Altogether, 5% flunked in history. The maximum failures were in science. The least failures were in history. More students failed in English than in mathematics. Students get good practice in such exams, so they should give enough time seriously for practice. Then only they will be able to get good marks in the board exam. Information transfer, non-verbal to verbal. Read the fact file and develop a paragraph describing the Andaman and Nicobar Islands, geographical area, number of islands, number of inhabited islands, number of districts, population census 2011 3.80 lakhs, capital city Port Blair. Let's begin. Andaman and Nicobar Islands is a union territory of India consisting of 572 islands, of which 30 are inhabited at the juncture of the Bay of Bengal and the Andaman Sea. These islands have 3 districts and as much as population of 3.80 lakhs according to 2011 census. The territory is about 150 km, 93 miles north of Aceh in Indonesia and separated from Thailand and Myanmar by the Andaman Sea. It comprises 2 island groups, the Andaman Islands partly and the Nicobar Islands, separated by the 150 km wide
10-degree channel on the 10-degree nautical mile north parallel with the Andaman Islands to the north of this latitude and the Nicobar Islands to the south or by 179 kilometers. The Andaman Sea lies to the east and the Bay of Bengal to the west. The territory's capital is the city of Port Blair. The total land area of the island is approximately 8,249 kilometers square, 3,185 square miles. The territory is divided into 3 districts. The Nicobar district with Car Nicobar as its capital, the South Andaman district with Port Blair as its capital, and the North and Middle Andaman districts with Maya Bandar as its capital. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा